morning students. I hope you are fit and fine. Today we will do the exercise 3.2 of unit 3 subtraction. Today we are subtracting the bigger numbers. So first of all we revise something which we have done earlier. Now look at here beta. In subtraction सबसे पहले हमें subtraction में किस चीज का ध्यान रखना है कि always write the bigger number on the upper side, bigger number on the upper side and the smaller number at the bottom side. Right बेटा, अगर आपको कोई भी दो नंबर दिए गए हैं आप कंपेयर करेंगे कि विच वन इज बिगर. जो बिगर होगा उसे हम ऊपर लिखेंगे और जो स्मॉलर नंबर होगा उसे हम नीचे लिखेंगे. लिखते वक्त भी हमें यह ध्यान रखना है कि वी राइट द नंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू. वंस के नीचे वंस आना चाहिए, टेंस के नीचे टेंस आना चाहिए, 100 के नीचे 100 आना चाहिए एंड थाउजेंड्स के नीचे थाउजेंड्स आना चाहिए. राइट. सो हमने एक और चीज करी थी कि हमने बिगर नंबर को हम क्या बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ सब्ट्रैक्शन. बिगर नंबर को हम क्या बोलते हैं बेटा? माइन्यूट. एंड स्मॉलर नंबर को क्या बोलते हैं बेटा? हम सबट्रेंड. और जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम डिफरेंस. इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी डू द exercise 3.2. This is your book exercise. Okay, A part, subtract. You will do the A part in the book. Okay, now we do the first. 6 minus 3. So after 3 count up to the 6. 4, 5, 6. How many they are? They are 3. Now 1 minus 0 is, when we subtract 0 from any number, what we get? The answer is the number itself. Yes, 1. 1 minus 0 is 1. 2 minus 2, both have the same number. 2, 2. So 2 minus 2, जब हम same numbers को आपस में subtract करते हैं, what we get? We get 0. Now 2 is here, so we write down 2. So answer, difference of these numbers is 2013. The next is 8 minus 5. So after 5, 6, 7, 8. So what is? Answer is 3. 9 minus 8 is 1. 0 minus 0 is 0. 3 minus 2 is 1. So difference of these numbers is 1013. Now 4 minus 2 is 2. 9 minus 3 is, yes, you count 4, 5, 6, 7, 8, 9. How many they are? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 is there. 8 minus 4, 5, 6, 7, 8. How many they are? 1, 2, 3, 4. 4 minus 2, 2. Right? Now the difference of these numbers is 2462. Now the fourth is 7 minus 0. Again, when we subtract 0 from any number, the number is the answer itself. 6 minus 1, we are getting the predecessor of the 6. When we subtract 1 from any number, we get the predecessor of that number. 5 minus 3 is 2. 5 minus 1, 2, 3, 4, 5. 4. So you will do this exercise in book. And look at the part B beta. Write in columns and subtract. इस एक्सरसाइज को हमने नोटबुक में करना है. इज इट क्लियर? कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ. आई विल टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द पेज राइट डाउन द डेट, द डे, यूनिट 3, सब्ट्रैक्शन. ये सब आप ऊपर हेडिंग्स में लिखेंगे. देन यू राइट डाउन द एक्सरसाइज 3.2. वी विल डू some sums here. B is, then you write down the question, write in columns and subtract. What is the write in columns and the subtract? So what are the columns? These are the columns beta.
आपने इन डिजिट्स को, ये क्वेश्चन है, इसको आपने कॉलम में लिखना है, फिर आपने उसको सब्ट्रैक्ट में करना है। आप बिना, जब उन्होंने हमें बोला है कि राइट इन कॉलम्स, तो आपने कॉलम्स में लिखना है। इज इट क्लियर? द फर्स्ट इज 495 फ्रॉम 8695. So first of all we write ones, tens, 100 and 1000. We write down the place values. तो यहाँ पे greatest number कौन सा बेटा? 8695. Why? Because it's a 4-digit number and 495 is a 3-digit number. So we write the bigger number where? Yes, on the upper side. So we write it here. So it's ones, it's tens, it's 100, it's thousands. So we write according to their place values. Now look, this number is 495. It's a 3-digit number. So maybe write like this. Is it right? No, it's not right. Because in it, it's ones, it's tens, it's 100. Right? So हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। यहाँ पर हमने 4 को 1000 बना दिया है, 9 को जो टेंस था हमने 100 बना दिया है, 5 जो वंस था हमने उसको टेंस बना दिया है। सो अगर हम आपके लेफ्ट हैंड साइड से फिल करते हैं नंबर को तो वो आपका गलत जाएगा। सो आपने कैसे लिखना है इसको? वंस, टेंस, 100, 1000, बिगर नंबर इज इट। So what is the ones here? 5. Tens, 9. 100, 4. Now we put the sign of subtraction. Now 5 minus 5, both are the same number. The answer is 0. 9 minus 9 is again same number. Subtract from the same number. Difference is 0. 6 minus 4 is 2. And here is 8. The answer is 8200. So what we call the answer of subtraction? The answer of subtraction is called the difference. So the difference of this number is 8200. Like this. Now we move to the question number 2. This one. So here is 1585 from 1586. So which one is greater? 1586 is greater, so we write on the upper side and we write at the bottom side 1585. Now we subtract it. 6 minus 5 is 1, 8 minus 8 0, 5 minus 5 0, 1 minus 1 0. So the difference of these two numbers is only 1. You can write like this or you can write like this. आप दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं. Now the question number 3. 1004 from 7944. So which one is bigger? It's clear. 7944 is clear. Bigger number. So we write at the upper side and 1004 is smaller number. That's why we write at the bottom side. Now we subtract it. 4 minus 4 is, yes, same numbers. So the difference of the same number is 0. 4 minus 0, 4. 9 minus 0, 9. 7 minus 1 is 6. So the answer of this number, or you say difference of this number, is 6940. Okay, I will yes beta, now you will do these questions in your notebook in very proper manner. Mention the date and the day, unit, the name of the unit and the exercise, and please write down the place values also on the when you solve the question. Is it clear? So you will do the B, question number B, in your notebook. Thank you. Have a nice day.